So this is my design for rocket launcher. How it works is this is a wire. This is a wire. This is a wire. This is a wire. The wires are connected to two needles inside the rocket. They are inside the rocket and are attached to the launching mechanism. This is the rocket, and so before launching it, you have to take the rocket, fill it with a bit of gasoline, and attach it a bit lightly to on the launching mechanism. Then you press the trigger. The which this has I have used the lighter's sparking mechanism to create sparks here. Because if we have used gasoline, the spark will ignite the gasoline, making combusting it and making it the launch. Any questions? Vedika, did you understand? You have to think from the point of view of your maybe smallest audience. Can you make her understand? This is a wire, this is a wire, this is a wire, and this is a wire. This is a trigger. Have you seen a lighter? You know, have you wondered how it's lighting the flame? Not there's only gasoline you can see. There is a sparking mechanism right under the button that I've used here. Like this is the button which you You press understand what sparking is? equals electricity, small electricity. So the electricity created travels through the wires, and these two are two syringes which I've used because they're metallic. So there will be a spark here and it will ignite the gasoline which I told you. Do you know what ignite is? It will burn the gasoline, Do you know what making it do you know what boom gasoline is? boom. Equals to burning liquid thingy. It's like No, petrol. Laksh, you're not understanding. Understand this. Yes. You again are doing the same thing which almost every kid does. You're thinking from your perspective, what you know. You're not thinking from audiences. तुमने क्या किया है? तुम ऑडियंस को एक ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग को एक सर्टेन लेवल पे अज्यूम कर चुके हो और तुम उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से फिर बात कर रहे हो. Come down to it. What understanding level she might be at? She might be at. How do you know? You know that maybe, and maybe you can take him for granted because you know that he knows this much. ठीक है. But she doesn't. She doesn't. There would be 10 different people who doesn't. तो यू आप अपने दिमाग के हिसाब से बोल रहे हो विच इज फाइन बट ऑडियंस भी तो उस लेवल तक आने चाहिए ना अगर वो नहीं है तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन वेस्ट हो जाता है राइट Yeah, so उस बच्चों को अभी as कंबशन के बारे में कुछ भी नहीं पता combustion is when मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंबशन के बारे में बता दो बस शुरू हो गए तुम मेरा मतलब ये उसको वो भी नहीं पता है और तुम उसे इग्नाइट वर्ड कंबशन सब उस यू आर पुटिंग यू जस्ट लाइक throwing those words at her how would she know yeah, I use more simpler terms. simpler terms and also see from the point of view of the level of understanding of the audiences अपने दिमाग के हिसाब से लेवल सेट करके बात मत करो Yeah, so basically it creates a spark here, and I told you this is the rocket. It isn't attached to the like firmly attached to the launching thing, the stick which I'm using this. Yeah. So I what I've done I would have done is to create for launch to send it into the sky. I would take this out, put a little petrol in it, anything that can burn, lighter thing. So
If it's gas, then I would just do this and attach it. But if it's liquid, I would put it, spin it a bit so it covers the whole inside of the rocket, and then I will attach it. So when I press this trigger, and it's the I with the fuel which we put will start to burn because there's heat sparks. So it will launch. थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। बेटा वेदिका के लिए आपको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत, जिसको आप बहुत बेसिक समझ रहे हो ना, थर्ड स्टैंडर्ड में है वेदिका। दैट डजंट मीन कि वो समझ नहीं सकती है, इट्स जस्ट शी डजंट नो बिग वर्ड्स, शी डजंट नो बिग थिंग्स, जैसे जो आप बात करते हो। अनिका, डिड यू अंडरस्टैंड रियली? कोई बात नहीं। एनी क्वेश्चंस? तुम्हें कुछ ऐड करना है? ठीक है, मुझे बताओ कि जो तुम गैस इसमें फिल कर रहे हो, या व्हेन यू स्पार्क इट, व्हाई डज इट स्टार्ट टू कंबस्ट? कंबशन क्यों स्टार्ट होता है उससे? Because the spark has creates a bit of heat which lights the light of the wind. ऐसा गैस की जगह बारूद भी डाल सकते हैं? She's my type. She knows how I think. नहीं, उसमें बारूद नहीं डाल सकते हैं। बारूद को जलाने के लिए काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वो बारूद रैपिडली बर्न नहीं करता। माइट, बट ट्राई नहीं करना। मतलब कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं जो कंबस्ट होता हो, जो बर्न तेजी से करने लगे, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। एंड इट माइट बी वेरी रिस्की ऑल्सो, सो डोंट ट्राई दैट। ठीक है, हाँ। या सो तो ये जो गैस है, या तो तुम कह रहे हो स्पार्क से इट स्टार्ट्स टू इग्नाइट, इट स्टार्ट्स टू हीट अप, तो उससे क्या होता है? इफ इट स्टार्ट्स टू हीट अप, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली? due to the rapid pressure created by the Why would pressure increase? Because of heating. वो सिर्फ हीट नहीं हो रही है, उसके साथ कुछ और भी हो रहा है। जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, कंबशन, दैट हैज अ मीनिंग। the particles inside the uh, rocket will start, because due to heating they will start to vibrate rapidly, which I think is the reason why it launched. No, they do one more thing after that. They start to react with the oxygen. Yeah. A chemical reaction takes place. That is what is called combustion. And then a huge amount of energy is released. That energy pushes the rocket up. ये कंबशन के बारे में बात करते हुए या रिसर्च करते हुए समझ में आना चाहिए था तुमको। कंबशन इज दैट, कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन। जो गैस पे होता है, एलपीजी निकलती है गैस से, घर पे यूज होता है, कंबशन हो रहा होता है वहाँ पे। So that fire you see, combustion is happening over there. Yeah. Okay. The next question is why the rocket flies off. मतलब why doesn't it burst over there? वो ऐसा fly ऊपर क्यों उठ जाता है? वहाँ पे ऐसा फट या टूटता क्यों नहीं है? उसका प्लास्टिक जो है, तुमने सिरिंज का कवर यूज किया था ना रॉकेट के लिए, सिरिंज का कवर यूज किया था ना रॉकेट के लिए, वो टूटता क्यों नहीं है? It should break ना. Why would it fly off? Because the energy, because the particle because the particles in the syringe are the tightly bonded, so they are hard to break. So when it combusts, the as I said, I have really lightly, I haven't firmly placed it on the launching mechanism, like not really hard. So the combustion takes the easy route, and the com- creates and exerts the energy downwards. Okay. Anything guys? किसी को कुछ पूछना है? क्यों? Anything you want to add?